Unit 3 is American literature from 1850s to the contemporary period. बहुत vast. 1850 10 mark पे. You know the mark division? British literature to contemporary period 40 marks. Indian English literature 10 marks. American literature 10 marks. 60. 20 is world literature. 80. 10 is literary criticism. And 10 marks is grammar. Ela 100 marks. So more thrust होची British literature. तापर है वर्ल्ड लिटरेचर किंतु अमेरिकन लिटरेचर माने जेती भी तमर अच्छी यू ऑट टू स्कोर 10 आउट ऑफ 10 सो अमेरिकन लिटरेचर हो बा ब्रिटिश लिटरेचर हो इवन इफ इट इज वेरी वेरी वास्ट किंतु तमर केते गुडे सिलेक्टेड राइटर्स को तमे पढ़िबो नॉट दैट जे ईच एंड एवरी केता बही तो पढ़िया प्रश्न उठुनी जस्ट सब जिनसर स्टोरीटा जानो समरी टिके टिके जानो को राइटर्स मानकर सो अमेरिकन लिटरेचर यू ऑट टू have that kind of a knowledge. Okay, now अच्छा एटा खाली गोटे पसि जाइछि यूनिट 3 रे यूनिट 2 रो क्वेश्चन सो अमेरिकन लिटरेचर टा को तमे जानिबा को हेले माने सब बेले डोंट थिंक जे मु खाली एग्जामिनेशन पर्पस रे केतटा क्वेश्चन जानि देले मोर हे गला अनलेस एंड अंटिल जेंते इंडिया रा प्रेजेंट सिचुएशन तुम जदि एनालिसिस करिवो इफ यू डोंट गो बैक टू द इंडिपेंडेंस मूवमेंट व्हाट हैपेंड व्हेन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड इन 1950 तापर केमिति केमिति हैला unless and until you know all these factors all these things you won't be able to make a proper analysis or evaluation or assessment of the present Indian condition सेमिति अमेरिकन लिटरेचर जाने खेले तुमको बहुत पुराना जॉन जेम्स फेनिमर कूपर एमान गडू जेवा कहनी 1850 परठू सो 1850 जेतले नेथानियल हॉथर्न तांकर स्कारलेट लेटर लिखि पब्लिश करते 1850 रे द हाउस ऑफ सेवन गेबल्स वाज पब्लिश्ड इन 1851 सो सेथि पई 1850 रु तुमको तमरो दिया जाय काहे कि ना बिकॉज़ हमर हॉथर्न कर स्कारलेट लेटर American literature जो मैंने special paper those who have opted for American literature as a special paper scarlet letter समस्त नहीं करता है सब वर्ल्ड इंडिया सारा सब यूनिवर्सिटी रे जो ठी American literature अच्छे scarlet letter और हर्मन मेलविल रो मॉबी डिक ए दीटा प्रेस्क्राइब है ची मस्ट थोरो एडगर एलन पो ए माने करना था किंतु ए दी जो मस्ट बिकॉज in 1850 so Hawthorne's Scarlet Letter was published in 1850 then the House of Seven Gables was published in 1851 1851 Moby Dick was also published Moby Dick the Whale was published in 1851 by Herman Melville eta thila Hawthorne Nathaniel Hawthorne ये है हर्मन मेलविल मॉबी डिक होची हर्मन मेलविल एंड हॉथर्न कर होची द स्कारलेट लेटर इट्स अबाउट हेस्टर प्रीन से स्कारलेट लेटर सेति पे 1850 ऑनवर्ड्स तमरो अच्छी सिलेबस रे नाउ इफ यू गो बैक टू द हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लिटरेचर American literature or history, American co-mane, they were the Puritans, they were the Quakers, they were the dissenters. The mane sab kon? I'll explain it to you. Try to understand. ए माने हेले आंको कहते डिसेंटर्स आमर डिसेंट एसेंट माने को एसेंट माने जो माने एग्री करंती डिसेंशन माने जो माने डिसएग्री करंती
So these two, the Puritans and the Quakers, they went against the British Anglican authority, the church authority, and some of the practices of the church. Some of the practices of the church. So Anglican Church, Church of England, so the king was all in all. Separate Roman Catholic Pope होची all in all. किंतु English Anglican Church रो England रो Anglican Church रो head होची king. So एमाने Anglican Church रो केते गुड़िया reformation, some things they never liked it. कारण Puritans माने तांकर थिला आमे तो सब we all know Oliver Cromwell. We all know how John Milton was a Puritan. So the Puritans believe that we are born sinners. Original sin because Adam or Eve committed the sin first, for which they were thrown out of Eden, paradise, earth, and they were further, we were restored with the grace of God, Jesus Christ, and ultimately we could recover ourselves. So Puritans माने कहते जे lead a very economical life. Puritan माने personal freedom भल पाती जे से माने से टिके strict किंतु they always vouch for personal freedom. से माने कहते जे आउ भाया मीडिया दरकार नहीं. नॉर्मल देखो बहुत भलो जिंस से कहते खाली टिके बेसी strict हे गले तामान तांको लोक चिड़िले. से माने कहले जे मु सपोज जीबी भगवान को पूजा करिबी, मु मोर गली ठाकुर को पूजा कली, मो इच्छा जहाँ इच्छा ता दक्षिणा देली, दक्षिणा देकी मु पळे आसली. मते मु जो पूजा करी मोर जो भाया मीडिया दरकार गोटे ननाटीए से नना बसिक पुरी मंदिर तुम आगुरी कौन होता से नना मैंने तुमको तुम एति टंका नदेले से तुम नड़िया बाड़े दून तुमको शाढ़ी चढ़े दून. आई रिमेम्बर मोर गोटे इनसीडेंट मुझे जाइली विमला मंदिर रे, से विमला मंदिर पुरी मंदिर रे से कहले जे हब ना तुम किछि कर परिबनी, 1000 टंका दियो तुम शाढ़ी चढ़ा नले हे परिबनी. दैट इज द एटीट्यूड. प्यूरिटन माने कहती जे ऑल वाया मीडिया किच्छे दरकार नहीं, द बाइबल इज एवरीथिंग. भगवद गीता श्रीकृष्ण अर्जुन को कहते दैट इज एवरीथिंग. निजे भगवद गीता पढ़ एंड ट्राई टू अटेन गॉड. तो प्यूरिटन मान को यही बिलीफ था. तेणु से कहले गोटे चर्च भितर सपोज तुम बहुत गुड़े ब्यूटिफुल आर्टिफैक्ट सब सुंदर चित्र विचित्र कर गोटे चर्च भितर, तो लोकर माइंड डाइवर्टेड हो, इाड़ू देखो से जीसस को देख चर्च पूजा करू ना ये कौन लिखा है ये भारी सुंदर पेंटिंग से भल ड्रॉइंग टे. सो दे नेवर लाइक इट. से कहली ना जिते बड़े चर्च रो सराउंडिंग टा एकदम सिंपल रहिबो, सो दैट लोकों से जो रिलीजियस फीलिंग आसीबो एंड दे कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन गॉड. दिस वाज प्यूरिटनिज्म. सो से प्यूरिटन्स माने इंग्लैंड थिएटर बैन कर देथिले प्यूरिटन्स माने. So they became more strict. Okay. अच्छा Quakers मानकर होची बेसी they are also very independent minded. Quakers माने very independent minded. तेणु Quakers आउ जो Puritans माने dissent कले, disagree कले with Anglican Church authority, तो तांको से माने बहुत persecute कले. persecute माने कौन एक तो मरा पिटा जहाँ करंती, प्लस इतनी से माने को टैक्स फाइन दियंती जे माने से माने कौन से माने तो 10 जन्म से फाइन दे परिबे. Understood? That was the reason. तो सत्य से टॉर्चर होते. सो दे डिसाइडेड टू कम टू अ न्यू प्लेस. से इंग्लैंड राजा अमेरिका रे जागे कि अमेरिका रे कौन ना ग्रीक्स माने थिले, स्पेनिश थिले, पोर्टुगीज थिले, तो एम माने भी गले. ऑलरेडी कोलंबस हैव ऑलरेडी डिस्कवर्ड द यूनाइटेड स्टेट्स. तो ए माने किछ लोक पळेले गोटे बोट रे अटलांटिक सी रे जाइकरी पहुंचले न्यू इंग्लैंड रे बा ईस्टर्न अमेरिका रे पहुँचले, जोटी कि न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया एगुड़ा सब ईस्टर्न अमेरिका रे एमाने आसी सेठी पहुँचले. एंड प्यूरिटन्स माने सब बड़े एजुकेशन को दौले इम्पोर्टेंस. सो व्हाट दे डिड, दे एस्टाब्लिश स्कूल्स एंड कॉलेजेस. तेन से कहले आमे काहे कि सब बड़े डरी के रहिबा, वी कैन नॉट प्रोफेस आवर ओन रिलीजन ओपनली. तेणु आम एमती गोटे जगार जा आम जहाँ चाहूचे आम अनुसार आम गोटे कंट्री आम अनुसार आम रहा, आम अनुसार आम चर्च करवा, आम अनुसार आम
स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज करवा आम कोर्स सिलेबस सिलेक्ट डिसाइड करवा दैट इज हाउ दे केम अवे ओके नाउ एमाने गले प्योरिटन्स एंड क्वेकर्स सो दे फर्स्ट केम तो हु वर they were the tortured British people they were the tortured Britishers सही इंग्लिश लोक आसिक यूनाइटेड स्टेट्स रहिले अच्छा कले कौन अन्य माने भी थिले ह्यूज लैंड से विराट कंट्री टे लैंड एरिया बहुत सो एमाने कौन कले ना धीरे धीरे चालाक लोक थिले दे वेरी क्लर्जीमैन पाठ पढ़ी टे बाइबल पढ़ी जाइछन्ति पाठ पढ़ी सो दीज पीपल ये जो नेटिव अमेरिकन मान को जो आम जो रेड इंडियंस कहूँ नेटिव अमेरिकन्स से रेड इंडियंस गुड़ा को धीरे धीरे सब जमी बाड़ी थी बिकज से नेटिव ना दे वर द ओरिजिनल ओनर ऑफ द लैंड्स तांको से कौन कर से इनोसेंट दे वर इनोसेंट पीपल निरीह लोक जंगल नेचर रहती पाठ साठ इलिटर किसी जाना तो से ट्राइब्स गुड़ाक ट्राइबल भाया ट्राइबल लीडर तांकर बिलीव करती तो से कौन कले ये लोक गुड़ाक हटई हटई गले ट्रिक करी जमी सब नहीं नहीं गले आ भगे भगे गले सो से लोक निज जगार दे वर डिस्प्लेस्ड पछे 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 नहीं कुआड ना कुआडे छाड़ीदे एंड टू दिस एक्सटेंट गोटे अच्छी आई थिंक बीए प्रेस्क्राइब होती कैप्टेन सिएटल स्पीच आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग जो मन अमेरिकन लिटरेचर स्पेशल पेपर ना तो जान न कैप्टेन सिएटल गोटे स्पीच अच्छे देखो तुम एठी जहाँ ना कि सिएटल सिटी है अमेरिका रे सो एमाने कौन कले ना तो से धीरे धीरे एम को पूरा डिस्प्लेस करते डिस्प्लेस करी करी कौन है ना लैंड गुड़ाक आक्वायर करगले अच्छा क्लर्जीमैन दिन राति चर्च रे बसते तो पैसा को माने जमी चाष कर जाना ए कम किए कर सो व्हाट दे डिड से माने अफ्रिका रु लोक नहीं आइले तांको स्लेव करके धरिकी आसे कृतदास करके आइले आउ से किछि पैसा देकरी बस खटेले काम करेले स्लेव मान तापरे एमाने when they went on dominating over others and English language तांका language कौन जेहेतु इंग्लैंड आसचन तांका language कौन English and these people started not only displacing the red Indians अन्य जो स्पेनिश ग्रीक्स पोर्टुगीज ए मानक भी हटेवा आरंभ करदेले माने सेमान ऊपर से डोमिनेट करवा आरंभ करे सो आफ्टर दैट किछि दिन पर ए ब्रिटिश लोक से ब्रिटिश लोक अगेंस्ट फाइट कले ब्रिटिश गवर्नमेंट अगेंस्ट फाइट करी 13 कॉलोनीज जो तैयारी है से 13 कॉलोनीज रे अमेरिका गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन 1776 सो ब्रिटिशर्स फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एतिक जानता ब्रिटिशर्स फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स टू गेन देयर इंडिपेंडेंस ओके सो अमेरिका बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1776 4th जुलाई 1776 अच्छा तापर कौन है ना देखो स्लेव माने आसीगले जंती स्लेव गुड़ा को धरी चले चले धरिकी खटेवा आरंभ कले एक्सप्लॉइट कले स्लेव मान को स्लेव को से बिक्री करवा आरंभ कले सो व्हाट हैपेंड जदि एतिक तुम जानिबो हिस्ट्रीटा टिके जानिथिले यू कुड बी एबल टू आंसर मेनी क्वेश्चंस अच्छा लेट मी टेल यू अच्छा ये स्लेव्स मन को से माने प्रथमे कहते निग्रो आफ्रिकन लोक को आफ्रिकन कंटिनेंट जो मैंने जमाइका जो जगह कैरिबियन आइलैंड रु आसतु से जो भी आसतु सो दे वर द आफ्रिकन्स आफ्रिकन कंट्रीज जो मैंने आसे निग्रो कहले निग्रोटा गोटे डेरिगेटरी टर्म सम्मानजनक डिग्निफाइड टर्म नुहे तापर से निग्रोटा को चेंज करके हला निग्रो वर्डटा चेंज हला एज ब्लैक अमेरिकन्स ब्लैक्स
एगेन एटा भी डेरोगेटरी है आकु भी लोक को तो भल लगे तो किसी है कौन ना देन ए ब्लैक अमेरिकन्स फर्दर तक ना हो गला जेहेतु से आफ्रिकार आमेरिकार सिटीजनशिप नहीं सो से कहला आफ्रिकन अमेरिकन बर्तमान कौन कहूँ से कहूँ now they are known as African American. That means born in Africa has taken the citizenship of America. तो आमर ए कौन सुंदर पिचाई मान कौन कहूँ इंडियन अमेरिकन born in India but have taken the citizenship of United States. So बर्तमान तांको कहूँ African American which is a very very dignified term for the blacks. Okay, so these blacks ए ब्लैक माने सहिला कौन ना जमीबाड़ी चाषटा कौटी होता बेसी फ्यूडल लॉर्ड्स जमीदार गुड़ाक फ्यूडलिज्म फ्यूडल लॉर्ड्स गुड़ा बेसी थिले साउदर्न अमेरिका मु एक्सट्रीमली शॉर्ट रे कहूँ साउदर्न अमेरिका रे रहले बेसी लैंडेड लोक एमान रहले लैंड ओनर्स बेसी तो जमी जी चाष करने कौन दरकार मूलिया दरकार हलिया दरकार तो कौ मैंने मूलिया कम करेंगे तो एमान तो क्लर्जी लोक दिन राति 24 घंटा चर्च रहिले तेणु तांकर दरकार स्लेव तो यही निग्रो ब्लैक्स मान को आनिक से गोती श्रमिक करके स्लेव करके खटेले अच्छा whereas northern american लोक माने सेमानकर मोस्टली सेमान एते स्लेव ओरिएंटेड नथिले ओके सो देयर इज अ पर्सन कॉल्ड तुम समझ जानथो ता ना होचे अब्राहम लिंकन फादर एबी तन कहंती द ग्रेट अब्राहम लिंकन सी कोन करथले ही हैड ए स्टेप मदर अब्राहम लिंकन को लाइफ टा पढिबो जरा +2 रे आगु जेतेबेले जो इनविटेशन जस्ट पूर्वरु अल्टरनेटिव इंग्लिश रे तांकर थिला Abraham Lincoln biography. So Abraham Lincoln, when he was known as Father Abbey. He was such a wonderful gentleman. ताकि लोक माने Father Abbey डाकंती अमेरिका रे. लिंकन का निजर स्टेप मदर थिला. भारी गरीब थिले न्यू ऑर्लिन्स रे. तो लिंकन कौन कले ना जेतल छोट पिलाटे थिले बुली जानती पाठशाला पढ़े नाही सुविधा नाही गरीब तो लिंकन जेतबेले जानती से देखले छोट पिलाटे थांती ही वाज वेरी यंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अब्राहम लिंकन से देखले लोक गुड़ाक सब बसचंती आमर जेमती जो विभिन्न बस स्टैंड ये सब जगह सब न थाए सब फुटपाथ सेमती फुटपाथ भले आइके मान सब बसथिबे समस्त गोटे टैग मरा हिथिबो दाम से लोक गुड़ाक स्त्री माने मेन वुमेन चिल्ड्रन आउ लेखाई तो फॉर सेल मान जेमती जिनस बिक्री हुए सेमती लेखाई तो फॉर सेल सो एमती लेखाई तो फॉर सेल आ गोटे प्राइस टैग समस्त थिबो सो लिंकन फेल्ट कोन ह्यूमन बीइंग्स आर सोल्ड मु जानते जिनस बिक्री हुए of things articles are sold but human beings are sold a young woman 35 years of age for sale so he felt जे मनीष बिक्री होचंती जो गोटे लेडी विथ चिल्ड्रेन ताको जे तमे बिक्री कर दला तार व्हाट विल हैपन शी सेपरेटेड फ्रॉम द चिल्ड्रेन व्हाट विल हैपन टू द चिल्ड्रेन कैन सी निजे तांकर स्टेप मदर तो लिंकन could feel the pangs, the anguish, the trauma, the grief of the people. तो से सत्ते बड़ भाव कही चलले जे मु जत्ते बड़ी मते भगवान गोटे चांस देबे मु फर्स्ट काम करबी आकु आगे अबलिश करबी ए बिक्री बंद कर देबी स्लेवरी बंद करबी से मने मने से डिटरमिनेशन मुंडे रखी चलले एंड लेटर ऑन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स आउ प्रथम कम है ही एबॉलिश्ड स्लेवरी अमेरिका रे प्रति प्रेसिडेंट दीटा टर्म सब दि जाए फर्स्ट टर्म रे से जहाँ करने द प्रोग्राम द ब्लूप्रिंट ही विल प्रिपेयर सेकंड टर्म में ही विल एग्जीक्यूट
It was only Franklin D. Roosevelt who was elected president 3 times. लोक मनकर माने डिमांड पाई से लोक डिमांडेड दैट रूजवेल्ट शुड रिमेन द प्रेसिडेंट फॉर द थर्ड रन फॉर द प्रेसिडेंसी फॉर द थर्ड टाइम. ओके सो ये कौन कले ना हु लाइक लिंकन एब्राहम लिंकन abolished slavery. So जेमिति ही abolished slavery जेमती से slavery abolish कर देले साउथ लोक माने डिड नॉट लाइक इट कारण सही माने स्लेव ऊपर बेसी डिपेंडेंट. नॉर्थ लोक कले हमर किछ तो प्रॉब्लम नाही स्लेवरी abolish जो दिस पीपल शुड बी रिलीज्ड दे शुड बी गिवन फ्रीडम. बट the southern people कारण से जमीर से एग्रीकल्चर लैंड था से एग्रीकल्चर एरिया टोटली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर चाष पे डिपेंडेंट. चाष करिवो की मूल्य दरकार स्लेव पड़े चाष की करिवो विराट विराट 100,000 एकर जमी धरी बसचंती व्हाट विल हैपन टू देम. सो दे ऑब्जेक्टेड टू इट. से माने स्मॉल से तबले अमेरिका कोन डेवलप था किछ नथला. स्मॉल बिजनेसमैन सेठी थे ऊपर नॉर्थ रे ए माने थे स्मॉल फ्यूडल्स. यांको भीतर गोटे सिविल वॉर है. द सिविल वॉर इन द यूनाइटेड स्टेट्स आरंभ है प्रथम दिन स्टार्ट है अप्रैल 12 12th April 1861 नो 1865 सिविल वॉर का चला बिटवीन whom between the war the civil war was between the northern countries states and the southern states. And you know how many people died? 6,20,000. तांको जो रिपोर्ट अच्छी वो पढ़ुଥିଲି. I have because more I had American literature as my special paper when I was doing my post graduation. और सेते बेले पिले तम मानक भले त आमे नथिलु. सो हमरो सब कोन हुए सेते बेले हमरो बही आमे खाली पढु जहा पाइलु लाइब्रेरी दिन में हम लाइफ टा लाइब्रेरी कॉलेज सकाळे जीवो 2:30 रे क्लास सर जे 2:30 टू 5:30 लाइब्रेरी बस पढु. सो वी गो ऑन रीडिंग बुक्स. सो सेथे आई रिमेंबर 6,20,000 सोल्जर्स दी पटरु मरी थे. 6,20,000 सोल्जर्स मरथिले से सिविल वॉर रे ए 4 वर्ष भीतर. एंड तांकर टोटल एनरोल्ड हेतले केते लोक जानछ त अराउंड अंकर होची बोते 37 लाख तांकर थला 28 लाख एनरोल्ड हेतले सोल्जर्स अराउंड मोर देन 50 लाख. केमिते वॉर है कि ब्लडीएस्ट वॉर टाइम था. आ से वॉर रे से एबॉलिश कले स्लेवरी पे सेथि पय एब्राहम लिंकन वाशिंगटन डीसी रे थिएटर रे सिनेमा देखा जायछंती. एब्राहम लिंकन देयर वाज अ मैन कॉल्ड जॉन विल्किस बूथ गोटे एक्टर तो थिला. जॉन विल्किस बूथ गोटे एक्टर तो थिला. ही शॉट एब्राहम लिंकन ऑन द हेड. ताको शूट करी मारी देला. सो एब्राहम लिंकन वाज असैसिनेटेड. जहाँ पर कि वॉल्ट व्हिटमैन गोटे पोएम लिखछंती ओ कैप्टन माय कैप्टन जो सब पिला तुम जानी थिबो ओ कैप्टन माय कैप्टन. एंड एब्राहम लिंकन डाइड was assassinated by John Wilkes Booth and he went on shouting मारला बळकु sic semper tyrannis गोटे ग्रीक वर्ड टे कहला मारला बळकु sic ग्रीक वर्ड जोर से पार्टी करी कहिछि. he was caught जे सिक सेम्पर टायरेंट ए टायरेंट ये होचे टायरेंट डिक्टेटर टे एब्राहम लिंकन काहे कि से स्लेवरी एबॉलिश कला कहा को न पचेर के. तेनु सब टायरेंट मान को माने मार दबा माने दे शुड बी ओवरथ्रोन और दे शुड बी किल्ड. तेनु एई गुडा को से ही वाज शाउटिंग सिक सेम्पर टायरेंट इज कहि ही वाज शूटिंग से मारी चलता. हॉल टा भीतर बाबा केतो लोक से थिएटर भीतर फिल्म देखछन. आ एटा होची गोटे मोटो तांका स्टेट वर्जिनिया स्टेट तांका जो स्टेट होची वर्जिनिया दैट इज अ स्टेट जस्ट वाशिंग न्यूयॉर्क माने आई थिंक वर्जिनिया हां इट्स इन वाशिंगटन डीसी पाखरे वर्जिनिया गोटे स्टेट अछि. से स्टेट जोडी वर्जिनिया टोबैको से वर्जिनिया टोबैको तांकर गोटे सील अछि सिक सेम्पर टायरेंस.
ओके नाउ गला रहा एबोलिशन ऑफ स्लेवरी एंड व्हाट हैपेंड ए जो जतक ब्लैक्स थिले से माने एटलीस्ट स्लेवरी जो बिक्री बंद हो गले किंतु दीज पीपल दीज स्लेव्स स्लेवरी सिना पड़ेला से माने जे जहाँ फैमिली को जहाँ फैमिली को पाइले पाइले जी न पाइले कौन अच्छे some of them were united some could not be anyway ताकू छाड़ ए स्लेवरी एबोलिश हो सारा पर एमानकर कौन रही एमानकर इनकम नहीं किछि नहीं आंकु जो जमी दिगला सब टैक्स गुड़ा के दे पारे तो एमाने अल्टीमेटली कौन कले ना सब जाक शेयर प्रॉपर हेले एमाने एमिति ट्रिक जो ब्रिटिश लोक गुड़ा करते बदमाश से माने इतने ट्रिक करी एमिति कले जे से लोक गुड़ा जमी आ रखी पारे तो से सबुजा कौन से जमी एम नहीं गले आउ किसी जमी दिगला जो स्लेव मान को लिबरेट करदे से फ्री करदे किसी जमी देले किंतु एमिति भाव कम कले जे से जमी की रखिपारे तो से जमी देदेले निजे हेले भाग चाषी आम जो शेयर क्रॉपर कहू आमर भाग चाषी होकर चाष तो से जो पुअर को सही पुअर रही कथा बुझे कहीं नहीं एंड डू यू नो व्हाट यही अच्छा सो दे विल ब्रिंग अबाउट इट सो गोटे से वोटिंग राइट दिगलानी अरे वोटिंग राइट देले सिना से रिप्रेजेंटेटिव सेनेट हाउस ऑफ सॉरी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अमेरिकन सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव आम जमी लोकसभा राज्यसभा से गले से निज कथा से कहे तो से जीवे केमती वोटिंग राइट नथिले सो दे वर नॉट हैविंग वोटिंग राइट कहीं अच्छा एत चालाक से गोटे पोल टैक्स करती माने भोट दवा गोटे टैक्स दब पोल टैक्स ये तो अति गरीब एम कौट पोल टैक्स देवे तेणु कहीं भोट दे पारती तो से भोटिंग राइट पोल टैक्स टाक मार्टिन लूथर किंग जूनियर से ट्राई करके एबॉलिश कले जॉर्जिया रे प्रथम जॉर्जिया रे कहले सेठी लोक मान दिस इज आवर कंट्री वी आर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री बट वी डू नॉट हैव द अथॉरिटी वी डू नॉट हैव द राइट टू express our grievances or participate in any decision making process सब बड़े कही चलती सो ताकू फाइट करके प्रोटेस्ट करके से माने पार्टी तुंड गंडगोल करके से पोल टैक्स गला 1965 जस्ट इमेजिन करो 1965 रे ब्लैक्स माने पाइले राइट टू वोट वोटिंग राइट पाइछन वेरएज 1947 आमे इंडिपेंडेंस पाइलु 1950 आम कॉन्स्टिट्यूशन जो हैला ऑल ऑफ अस 1950 रे फर्स्ट इलेक्शन जो इंडिया रे हैला everybody who is above 21 years of age was entitled to cast his or her vote irrespective of caste creed religion race or financial status गोटे भिकारी भोट दे पारिबो गोटे प्राइम गोटे इंडस्ट्रियलिस्ट भोट से गोटे भोट से दे पारिबो सीक्रेट बैलेट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज किंतु वेयर एज एड डेवलप्ड कंट्री ब्लैक्स मान को 1965 रे वोटिंग राइट देले तेणु होल द यूनाइटेड स्टेट्स रो तुम देखिबो तांको जे लिटरेचर अच्छा से लिटरेचर तांको आइडेंटिटी कौन रहिला अमेरिकन कर आइडेंटिटी कौन जीरो आइडेंटिटी अच्छा तो ब्रिटिश लोक ना आ से माने बर्तन इंडिपेंडेंट हला परे से माने कहबे से तांको हिस्ट्री जे ब्रिटिश हिस्ट्री नेवर सो तांको हिस्ट्री स्टार्ट हला केबे धरिनियो 1650 रो स्टार्ट हला हिस्ट्री तांकर सो जो गोटे राइटर गोटे देश रे एनी कंट्री गोटे लिटरेचर केमिति ग्रो करे तुमर किसी पास्ट ग्लोरी थी पास्ट हेरिटेज थी ताकू नहीं कि तुम लिखब जमी आमर सब से लिटरेचर लोक कौन लिखुले से रामायण पर लिखुले महाभारत पर लिखुले और एनीथिंग आमर जो आमर जहाँ सब विभिन्न रिलीजन विभिन्न सन्थ साधु एम लोक लिखा दैट वाज द काइंड ऑफ रिलीजन लिटरेचर इन दोज डेज तांकर कौन अच्छे किसी ना बिकज 1650 से आसिले सो जहाँ सब लिखिले 17th century whatever they wrote what it was nothing but a copy of the British writers American romanticism in America माने सही Keats Shelley Byron करो लिखा प्ले माने सही शेरिडन सही गोल्डस्मिथ ए मानकर सिंपली कॉपी अल्लाह दी जन का लैंग्वेज समान इंग्लिश लैंग्वेज सो इट वाज सिंपली a copy idea was simply a copy of the British राइटिंग तो तांकर ओरिजिनल थीम रहिला कोटा तांकर थीम रहिला
slavery एटा जोटा कि समाने निजे एक्सपीरियंस करछन slavery then the anguish of the blacks that how they have tortured blacks man ko life e kon देख समाने गति करछंती all these things were topic for writing तेणु अमेरिका रे अमेरिकन लिटरेचर रियल जिनस जोटा कि आरंभ हला it started I would say it starts with Nathaniel Hawthorne's जेम्स फेनिमर कूपर को पर चली मु कंसीडर कर जे हॉथर्न कर स्कारलेट लेटर द हाउस ऑफ सेवन गॉबल्स एंड द फॉन्स एई गुडा कर ही स्टार्ट है बट किछि किछि से माने नुवा प्रकार लिखिबा आरंभ कले हाउ प्योरिटनिज्म केंति तंग हैरान करछि सो एवरीथिंग आस्ते आस्ते लेखा आरंभ है एंड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन पाइला से माने कम्पीट कले ब्रिटिश लिटरेचर और यूरोपियन लिटरेचर संगे early 19th century or just late 19th century, early 20th century. With Walt Whitman, Robert Frost, Ralph W. Emerson, Edgar Allan Poe, Henry David Thoreau, ଏମାନଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଏଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପଢ଼ିଲେ ଓକେ ସୋ ତମ ସିଲେବସ୍ କ'ଣ ଅଛି 1850 onwards ଓକେ now so this is more or less the American history अच्छा तापर आमे समस्तंकर जो मानकर अमेरिकन लिटरेचर थिबो जे वॉल्ट व्हिटमैन को निश्चय जानि थिबे से एडो मोटा बहिटे लिखता लीव्स ऑफ ग्रास एडिक मोटा बहिटे लीव्स ऑफ ग्रास आउ एम सो देयर इज अ थिंग एटा लिखि रखम मु लिखुची एटा को लिखि थाओ एजरा पाउंड जानचो द इमेजिस्ट who influenced T.S. Eliot a lot. So, Ezra Pound, Walt Whitman को परे लिखिले ताको लिखि रखो 1892 ये वॉल्ट व्हिटमैन एजरा पाउंड कहते ही इज अमेरिका ही किए ही इज वॉल्ट व्हिटमैन that he is America. His crudity Okay, so this is what Ezra Pound talked about Walt Whitman, that he is America, he is the representative of America. He has shown America in all dimension because jete bele sanka civil war sari gala परस्पर there was a truce हे गला गोटे peace agreement हे गला जे नाइ आ फाइट करबा ने हमें समस्त मिली मिसी करी
all the 50 states आमे एका संगे मिली मिसी के रहिबा and let us work for a common goal हमर हबो कोन after the civil war 1865 परे so तांकर common goal हला तीनटा जिंस मन रखता पले तांकर common goal हला production এই তিনটা so it was production progress ଆଉ ସେଥିରେ ରହିଲା କଣ ଏ progress ରହିଲା profit ବୁଝିଲା ତ ए प्रोग्रेस रहिला प्रॉफिट तमें तुम देख अमेरिकन लोकंकर एटीट्यूड कौन बदलला केमती बदलला जे आमर गोटे गोल हबो आमे प्रोडक्शन करबा जेते जिंस अछि आमे प्रोड्यूस करबा प्रोग्रेस करबा समस्त प्रॉफिट को अनेथबा सो अमेरिकन मन कर पैसा छड़ा किछ बुझंतिन से माने प्रॉफिट करबा आउ ता संगे आमे प्रॉस्पर आमे विल बी प्रॉस्परस एंड यू नो 20 वर्ष सिविल वॉर 65 रे सरीला 20 वर्ष भीतर अमेरिका रे गोटे स्टील प्लांट नथिला स्टील नथिला किछि नथिला 20 वर्ष भीतर ता माने 1885 बेलकु 1885 90 बेलकु अमेरिका हैला वर्ल्ड रा लार्जेस्ट स्टील इंडस्ट्रीज सारा पृथ्वी रे जति के रेलवे नेटवर्क थला तारा 50% नेटवर्क अमेरिका रे रहला जस्ट इमेजिन कर आमे केते वर्ष रा इंडिपेंडेंस पाइछु से लोक 20 वर्ष भीतर से देश रे एमिति यूनिटी आसला 20 वर्ष भीतर से कंट्री क्वाडे पहुंची गला तांकर मोटो हैला जेते जहा कला प्रोडक्शन बढ़ाइबा प्रॉफिट ओरिएंटेड आउ प्रॉस्परस हम होबा तेणु आमे जो कोन बाय हुक और बाय क्रुक जे कोन से उपाय मते पैसा रोजगार करे अछि मु काटो मोर एप्पल फोन किनिया पे मोर आईफोन किनिया पे पैसा नहीं किंतु मु आईफोन टे यूज करिवि केमती यूज करिवि कार चोरी करिवि कार स्नैच करिवि तो सेगुडा के सब अमेरिका रे जस्टिफाइड सब अमेरिका रे जस्टिफाइड सेते बेले लोक खाली माने एकदम एनी हाउ तुमको प्रोग्रेस करे खबु तुमको प्रॉस्पर करे को प्रॉस्परस हबा को हबो सो वॉल्ट व्हिटमैन को एजरा पॉइंट कर जे ही इज अमेरिका से अमेरिका जो क्रूडिटी जो स्टेंच जो गंध जहा ची क्रूड जिंस ये सब वॉल्ट व्हिटमैन ही इज नेवर ताको खराब लगे नहीं बिकॉज ही इज अमेरिका एंड वॉल्ट व्हिटमैन ताको खराब रे नहीं नांती he wanted to represent the United States in his poem Leaves of Grass. In 1842 रे I'll tell you एगुड़ा सब मन रखता सॉरी 1842 रे राल्फ वॉल्डो एमरसन जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट से गोटे लेक्चर दौले 1842 रे वॉल्ट व्हिटमैन से लेक्चर सुनिया को जाइथिले से लेक्चर रे व्हेन ही वाज लिसनिंग टू राल्फ डब्ल्यू एमरसन कहिले जे हियर इज द होमर ऑफ अमेरिका वॉल्ट व्हिटमैन को एमरसन कौन कहिले होमर ऑफ द अराइवल हियर देयर इज एन अराइवल ऑफ द होमर ऑफ अमेरिका सो व्हिटमैन को कहा गला एमरसन कहिले होमर ऑफ जो होमर ओडेसी लिखछन थी इलियड ओडेसी से होमर करो ग्रीक होमर करो होमर ऑफ अमेरिका and Walt Whitman promised that I will be representing America in all its color in all its variety tara sabbu jinso ko he said okay now so 9 soon that I can't do that mu jaha कहली सुनो lecture तुम करिवो don't expect so many mind maps and other things okay eta gala so बर्तन करिए चलो
So this is in brief the history of the United States. ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି କିଛି କିଛି ପଢ଼, then only you will be able to. ଆମେ କାରଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ନିଜେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପଢ଼ିଥିଲୁ ବହି ଗୁଡ଼ାକ, ଏଫ୍ ଓ ମ୍ୟାଥେସନଙ୍କର ବହି, ଆମେରିକାନ ରିନାସା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଟେକ୍ସଟ ପଢ଼ିଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ମନେ ଅଛି, ଟିକେ ପଢ଼ିଦେଲେ ମୋର ମନେ ରହିଯାଏ, because I had studied in those days. Okay, now Anita Desai received a Sahitya Academy Award for her novel A. Cry the Peacock, B. Clear Light of Day, C. In Custody, D. Fire on the Mountain. Anita Desai won the Sahitya Academy Award because ମୁଁ ୟୁନିଟ୍ 2ରେ କହିଥିଲି ଯେ Anita Desai, Arun Joshi, ଏମାନେ Anita Desaiର କାଉଣ୍ଟର ପାର୍ଟ ହେଲେ ଅରୁଣ ଯୋଶୀ. They explored the inner world of the protagonist, the psychological world of the protagonist. So Anita Desai dealt with the female characters and Arun Joshi dealt with the male characters, protagonists. So it is option D, Fire on the Mountain. So she got the Sahitya Academy Award for Fire on the Mountain. Next, the first famous African American playwright was, देखो इटा आरंभ the first famous African American playwright. Playwright means dramatist. So he was A. Lauren Hansberry, B. Charles Edward Gordon, C. Stephen Edward King, D. August Wilson. Man, सबू हेले African American or they are all Black American writers. So it is Lauren Hansberry. Lauren Hansberry is the first African American. She is the first famous African American playwright. She was Lauren Hansberry. Okay. Acha. Who was the first Black playwright to win a Pulitzer Prize? Pulitzer Prize is the most prestigious prize United States. So who was the Booker's Prize which England? The Pulitzer Prize which American. So who was the first Black playwright to win a Pulitzer Prize? A. Stephen Edward King, B. Charles Edward Gordon, C. Gwendolyn Brooks, D. August Wilson. It is Charles Edward Gordon who won this, the first Black playwright to win a Pulitzer Prize. Because a lokomane 1920 on 1965 ସେମାନେ independence freedom voting right ପାଇଲେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ପୋଜିସନ କ'ଣ ହେଲା ସେମାନେ ଗଲେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜମି ଗୁଡାକ ସବୁ ଯାହା ଥିଲା ସେମାନେ ରଖି ପାରିଲେନି ସୋ ଏମାନେ କ'ଣ ହେଲା ୟାଙ୍କର ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାନଜିସନ କ'ଣ ହେଲା ତାଙ୍କର ଯେ ଅପଗ୍ରେଡେସନ ହେଲା ଆମର ଯେମିତି ପୁଅର ରୁ ଜଣେ ଆସିବ लोअर मिडिल क्लास पुणी अपग्रेडेशन होकर लोअर मिडिल क्लास रू बीपीएल रू जो एपीएल होची तो अपग्रेडेशन होची तो सेठी हैरियट बीचर स्टो कहचंती इन अंकल टॉम्स कैबिन शी सेड दैट तांकर प्रमोशन ता कोन हैला फ्रॉम स्लेवरी सो सेमान का प्रमोशन कोन हैला ना समान कृतदास थिले दे वर बॉट एंड सोल्ड किंतु वर्तमान तांग जो पोजीशन स्लेवरी एबॉलिश हे सला परे से माने हे गेले चाकर सर्फ माने कोन चाकर तेन से माने सेमती बड़ बड़ लैंडलॉर्ड कर से माने हेले चाकर बा मूलिया एतिक हैला कि तांको बिक्री होतले से बिक्रीटा बंद हे गेला बा जण लोक पके ता मला पर्यंत रहिबो किमा से जो चाहिबा आउ काहा गोटे देई परिबो सेटा हबनी किंतु सेमान कोन चाकर हेकि रहिले तांका कंडीशन किछि इंप्रूव हेनी बिकॉज तुम एबे भी देखुचे हाउ जॉर्ज लॉयड वाज किल्ड ब्लैक्स मान को केमिति व्हाइट माने ट्रीट करंती तांका कंट्री रे रेसिज्म जोर अछि दे ब्लैक्स मान पई सेपरेट स्कूल थिला ना साउथ अफ्रीका रे करा हेतला बोली साउथ अफ्रीका करा हेतला एपार्थाइड पॉलिसी सेते बेले भी अमेरिका 1850s रे तांकर ब्लैक्स मान पई सेपरेट स्कूल थिला तांग से व्हाइट माने मिसनो थी The Black Arts movement started in the year
A 1960, B 1963, C 1965, D 1966. So black arts movement. So black लोग गुड़ाक culturally they are artists गुड़ाक भल artists ସେମାନେ. They are good musicians. ତାଙ୍କର ନେଟିଭ୍ ସେ ବ୍ରିଲିଆନ୍ସ ତାଙ୍କର ଅଛି. ସୋ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ଆର୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ କଲେ. ସେ ବ୍ଲାକ୍ ଆର୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ started, the black art movement started in 1965. Option C. It started in 1965. Who established the Black Arts Repertory Theatre in New York? A. Maya Angelou, B. Audre Lorde, C. Amiri Baraka, C. D. James Baldwin. ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ଆର୍ଟ ରେପର୍ଟୋରୀ ଥିଏଟର, ବିକଜ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଭାରି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଥିଲେ. ସୋ ଦେ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଶୋକେସ୍ ଦ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ. କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ତ ଗୋଟେ ଲିଡରସିପ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା. ସୋ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଦେର୍ ୱାଜ୍ ଅ ମ୍ୟାନ୍ କଲ୍ଡ ଅମିରି ବାରାକା ହୁ ୱାଜ୍ ଇନିସିଆଲି ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଲେରୟ ଜୋନ୍ସ. ଅମିରି ବାରାକାର ପୂର୍ବ ନାଁ ଥିଲା, ମନେ ରଖିଥାଏ, ଏଇଟା ଏମିତିଆ Leroy Jones. तार ना later on he changed into Amiri Baraka. तो सीए कौन कले ने गोटे ब्लैक आर्ट रेपर्टरी थिएटर कले न्यूयॉर्क रे. Ernest Hemingway's The Torrent of Spring is a parody of Sherwood Anderson's book A. Dark Laughter, B. The Triumph of the Egg, C. Winsburg, Ohio, D. None of the above. Now Ernest Hemingway ଆମର ସେମିତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ. Old Man and the Sea, some Farewell to Arms, Hemingway करा. तापर आउट टाइम शॉर्ट स्टोरी अछि ओल्ड मैन एट द ब्रिज. सो एगुडा को सब प्रेस्क्राइब टेक्स्ट. सो हेमिंगवे इज वन ऑफ द, ही वाज नोबेल प्राइज विनर. एई माने लेटर ऑन 1920 ऑनवर्ड्स अमेरिकन लिटरेचर एमिति प्रोग्रेस हला जे सेमाने ब्रिटिश लिटरेचर को तांकर पेरेंट कंट्री लिटरेचर को पछरे पके सेना आगु चलले. सो बर्तन वर्ल्ड रे जेते लिंग्विस्टिक्स रे जेते रिसर्च हेची, जेते नुआ आइडियाज क्रिटिसिज्म रे आसीची, सबु यूनाइटेड स्टेट्स रे आसी नले फ्रांस रे आसी. दीटा होची हॉटबेड, फ्रांस गोटे आ गोटे हला यूनाइटेड स्टेट्स. सो इट वाज, सो हेमिंगवे गोटे टॉरेंट ऑफ स्प्रिंग लिखिले. सो सेटा कहार पैरोडी ना, शेरवुड एंडरसन्स बुक डार्क लाफ्टर. इट वाज शेरवुड एंडरसन रो बही डार्क लाफ्टर, ताको पैरोडी कराई. पैरोडी माने कोन, ओडिया रे ताकंती व्यंग, ओडिया ता कोन कोनती व्यंग, जेमते रेप आम जोडा कि मॉक एपिक माने कोन गोटे अति सीरियस जिंस को थट्टा करके जो लिखिबा. सो ताको कोनती द पैरोडी. हु इज द ऑथर ऑफ लिंकन इन द बार्डो? ए. जॉर्ज सॉन्डर्स, बी. मैरिलन रॉबिन्सन, सी. जोनाथन फ्रेजन, टी. D. Tom Wolfe, which is George Saunders. He is the author of Lincoln in the Bardo. Yoda ka much latest modern American writers, play novelists. Who is known as the king of horror in modern American fiction? A. Stephen Edwin King, B. Ariana Alda, C. Paul Alexander, D. Ryland Adams. It is Stephen Edwin King. He is known as the horror king of horror in modern American fiction. जो माने हॉरर मिस्ट्री एगुड़ा को लिखती गोते आमर जो ब्रिटिश लिटरेचर गोथिक नॉवेल्स कहती सेठी हॉरर को स्टीफन एडविन किंग इज नोन एज द किंग ऑफ हॉरर. Dan Brown माने समस्त, इट वाज अ फिल्म 2003 film. He wrote a novel called Dan Brown is famous for his book A. Looking for Alaska, B. The Fault in Our Stars, C. The Da Vinci Code, D. None of the above. Dan Brown is famous for the Da Vinci Code. जोटा कि 2003 रे गोटे एक्सपर्ट सुपर हिट फिल्म हॉलीवुड फिल्म हेतला. किंतु ए जो दिस दा विंसी कोड वाज बैंड इन मेनी कंट्री. पाकिस्तान बैन करता था कहीं ना एठी से देखैथिले जीसस को इने अलगा लाइट रे देखैथिले. माने एंटायर बाइबल और रिलीजियस हिस्ट्री टाको टिके एपट सो ट्विक करके से लिखिथिले. Dan Brown, he is an American novelist. So it was banned in many countries. जेमती Salman Rushdie's Satanic Verses was banned in many countries. Similarly,
Dan Brown's Da Vinci Code was banned in many countries. Which is the first novel of Marilynne Robinson? A. Housekeeping. B. Go Set a Watchman. C. Think and Grow Rich. D. None of the above. It is the first novel of Marilynne Robinson. ମାନେ ସବୁବେଳେ modern American novelist ସବୁ. Housekeeping. ଏଠି କ'ଣ ସେମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଦେଖିବ ବ୍ଲାକ୍ ଆମେରିକାନ ରାଇଟର୍ସଙ୍କର ଲେଡିଜ୍ ୱିମେନ୍ ରାଇଟର୍ସଙ୍କର ଟନି ମରିସନ୍ସ ବ୍ଲୁଏଷ୍ଟ ଆଇଜ୍. Yes, you want to say something? Binodini Maharana, you want to say something? You want to say something? No, ma'am. Bajigala to? Okay. Now, most of the American women, ସେମାନଙ୍କୁ ତ voting right ଆଗ ନଥିଲା ନା. We were, ଆମେ ଏତେ backward country ହେଇକିରି ବି ଆମେ 1950 ରୁ ଆମେ voting right ପାଇଛି. ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆମକୁ voting right ଦେଇଥିଲା. ବଟ୍ ଇନ୍ ତାଙ୍କର ମୋଷ୍ଟଲି ତମେ ଦେଖିବ ବ୍ଲାକ୍ସ ମାନେ ଯୋଉ ବ୍ଲାକ୍ ଟନି ମରିସନ୍ ଏ ଯୋଉ ବ୍ଲାକ୍ସ ମାନେ ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେ ହ୍ୟାଭ୍ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଟର୍ଚର ସେମାନେ ହେଇଛନ୍ତି ଦ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଅ ଟର୍ଚର ଦେ ହ୍ୟାଭ୍ ଅଣ୍ଡରଗନ୍ ଦେ ୱେର୍ ମୋଲେଷ୍ଟେଡ୍ ରେପ୍ଡ ମାନେ ତାଙ୍କର କେମିତି କି ଲାଇକ୍ ମାନେ ଇନ୍ ଦି ହାଉସ୍ କିପିଂ ଅଲସୋ ସି Marilynne Robinson shows that how when the parents die how badly they are treated by the family members. जे आमे जो भाबुर जे इंडिया रे केवल झियो मान को घृणा करंती और women are used as commodities सेते बेले तांको कंट्री रे इंग्लैंड कोन अमेरिका कोन यूरोप कोन सेते भी सैया थिला. Women were treated as secondary citizens, object of pleasure, object of enjoyment. तांकर किछि नथले से माने to this extent तुम जानछो Virginia Woolf, you must be knowing, To the Lighthouse, Mrs. Dalloway, A Room of Her Own, and she became a feminist critic. Virginia Woolf, तांके जो Room of My Own, The Room of My Own, से जो लिखिछंती, she has said, जे and she had from a very good family, बहुत well-to-do family से झियो थिले. तांको भाई को पठाला कॉलेज आको कुआगला तुम घरे पढ़ तू घरे पढ़ तू स्कूल कॉलेज जाई परिबी प्राइवेट ट्यूटर से तो घरे पढ़ेबो. भाई रो गोटे सेपरेट रूम अछि किंतु भौणी पे गोटे सेपरेट रूम नाही. दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन शी नेवर लाइक्ड इट. देन शी रोट ए रूम ऑफ माय ओन. जोटा जे a girl has equal right as the female child has equal right as the male child. But this discrimination really destroys the confidence, the self-belief of the female child. आरंभରୁ ଘରେ ହିଁ तुमको destroy कर दियंती. आ बाहर लोक कोन करिवे? घर लोक जदि discriminate कले तो बाहर लोक काहे न करिवे? So in that country, so most of the blacks they got Toni Morrison like jo bluest eye. So what they have written, like Alice Walker jo color purple, like पढ़िले ना इत्ते कष्ट लागिबो, you won't believe. माने small girls 14 वर्षर पिला सेली and natty माने होचे Alice Walker color purple, and they have एटा होचे से माने true life true incidents of देखि छंती ताकू नहीं के सब novel लिखछ, not exactly true story, but एवला incident बहुत समय देख छंती. The girls were raped by their own father. They were raped by their father. They were mistreated by their parents. Ghauru se mane ko. And they were blacks. In Toni Morrison's Blue Style, Piccola is raped by her father and she becomes pregnant. They are so poor. In most of the novels you will find they are so poor, they want to earn money, and so they become prostitutes. यही गुड़ा को से blacks man को life को समान देखते हैं. And Maya Angelou had written a beautiful poem, The Caged Bird Sings. How they are caged birds, not given the freedom, not given the opportunity.
which of the following is not a characteristic of American transcendentalism? What is American transcendentalism? Transcendental कौन? A spiritual world quest for God. Amar jo what I would say, in a very spiritual surrounding. So American transcendentalism started with Henry David Thoreau, Edgar Allan Poe, or Ralph W. Emerson. So what is the characteristic of American transcendentalism? They spoke about individualism. They spoke about idealism, ideal world, individual माने व्यक्तिगत चेष्टा रे भगवान को पाइबो तापरे divinity of nature तन समाने they were lovers of nature like William Wordsworth, but they hated materialism. काहे के माने transcendentalism को गले because आगुरु too much of science, too much of logic, too much of reason. So भगवान को सेवन कले if you want to have a spiritual experience, so spiritual experience reason logic काम दिया नहीं, because faith begins where reason ends. जो जगह तुम reason करी जीवा reason सेठी सरी गला, जोठी reason सरीबो सेठी आरंभ हुए faith. So faith begins where reason ends. तो reason टा कौन? तुम rationative intellect से connected, logic, reason, thought, scientific, life cycle connected. So these transcendentalists, they went against the intellectualism, the logic, the reasoning of the people, of the intellectuals. So it was a reaction against the intellectualism. କରିକି ସେମାନେ transcendentalism ଆରମ୍ଭ କଲେ. ଯେମିତି Wordsworth turned to nature as a reaction to the 18th century urban poetry, urban literature, written in a language which only the elite urban class can understand, town, city people can understand. The poor man living in villages, they will not understand. So it was a reaction against. So 19th century romantic poetry was a reaction against the 18th century inane phraseology, the language used by the poets, the people they used, the characters in the poem. So similarly, एम्माने जो transcendentalists माने, it was a reaction against the intellectualism. So which is not a characteristics of transcendentalism, it is materialism. Otherwise, ये तीनटा होचे तारा characteristics. Divinity of nature. There is God is present in nature, in every object of nature. There is idealism, is the ideal state. मनुष्य चाहिए गोटे ideal state रे पहुंची परिबो. Who was the front runner of American transcendentalism? Who was the leader? It is Ralph Waldo Emerson. Emerson was the leader of transcendentalism. Edgar Allan Poe, Herman Melville, Mark Twain. Mark Twain तो छड़ा. Melville was an intellectual, so he was against the Herman Melville, the writer of the novelist of Moby Dick. So he was against the transcendentalists. The philosophy of transcendentalism arose in 1930s as a reaction to what? A. Intellectualism, B. Monism, C. Dualism, D. None of the above. Monism होची कौन? भगवान एक और dualism कौन? There are two. So आमर को अद्वैत बाद आमर शंकर कर कौन होची? अद्वैत. No द्वैत माने there are no two. There is only one. So dualism is two, monism is one. God is one. So it was 1930s as a reaction to intellectualism about logic, reason in philosophy, in religion. Transcendentalism was a reaction against intellectualism. Next, who among the following was an opponent of transcendentalism? Who was opposing transcendentalism? Herman Melville. Herman Melville, B. Emerson, C. Edgar Allan Poe, D. None of the above. Emandita transcendental? It is Herman Melville. Melville was against the transcendentalists. When was the novella Billy Bird published? Billy Bird ko? So Herman Melville ko loko mane bhal paunatli. He was never liked.
दो तांकर प्रथम 1951 रे लिखा था बट तांको ने पीपल नेवर केयर्ड फॉर हु दिस मेलविल इज इवन व्हेन ही डाइड नोबडी केयर्ड जे गोटे गोटे मरि जाइछि जे गोटे बड़ पोएट टा मरिगला बड़ राइटर टा मरिगला ही वाज नेवर रिकॉग्नाइज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स तेणु तांकर जे बिली बर्ड टा लिखिते गोटे छोटिया सरुटा बिली बर्ड भी आमे पाठ पढ़ला बेले अल्टरनेट इंग्लिश थिला सो बिली बर्ड वाज पब्लिश्ड इन 1924 it was published in 1924 so 20th century जेमती टीएस इलियट तांका सेक्रेट वुड रे मतलब मेटाफिजिकल पोएट्स को डिस्कवर कले when he was reviewing Grierson's metaphysical 17th century metaphysical poets he discovered the metaphysical poets as great poets who who had unification sensibility semiti early part of the 20th century then people discovered Herman Melville was a great novelist he was given due respect dignity and honor only in the 20th century so his small novella mane chotiya novel within 100 pages it was published in 1924 whose work is Billy Bird a Herman Melville because Melville sabu bele he was writing about the sea life amar sea life पर common lecture सब बड़े माने सब बड़े as a sailor as a captain as a crew member ताकर sea life टा को लिखिबे how life is in a sea in the ship तेनु ताकर so there is very long narrations description of the sea life जेमती हर मेलविल गोटे हेमिंगवे आ गोटे हैला sea life करछन हमर Joseph Conrad also he wrote about the sea life तेनु sea ऊपर बहुत description ताकर अछि okay so it is Herman Melville's Billy Bird was written by Herman Melville when was Edward Albee's Zoo story published A 1950 B 1952 C 1953 D 1959 Zoo story एटा भी जो मन अमेरिकन लिटरेचर थिबो तम मन एटा दिस इज सिनोनिम ऑफ ट्रांसेंडेंटलिज्म ट्रांसेंडेंटलिज्म होची कोन हमर तो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करंतनी ट्रांसेंड करिवो प्रा फिजिकल वर्ल्ड को ट्रांसेंड करिवो जेंति फिजिकल वर्ल्ड को ट्रांसेंड कले मेटाफिजिकल so I can't say it is metaphysical because transcendentalism is a kind of a quest आमे जेंति भगवान को क्वेस्ट करचू क्वेस्ट सर्च फॉर गॉड कहीं कहते भगवान आम भगवान भितर अच्छा कि आमको से कनसेंट्रेशन दरकार तेणु तांकर गोटे वाल्डेन पॉन्ड करथिले से वाल्डेन पॉन्ड रे समाने बसिकरी दे वर मेडिटेटिंग ट्रांसेंडेंटल्स माने दे वर लवर ऑफ नेचर so it was published in 1959 अच्छा एडवर्ड आल्बी रो जू स्टोरी बिकॉज अमेरिकन लिटरेचर जो मन नहीं छंती जो मन का स्पेशल पेपर थिला समस्त को पई मिनिमम 4टा प्ले प्रेस्क्राइब हुए गोटाला आर्थर मिलर यूजिन ओनेल टेनेसी विलियम्स एडवर्ड आल्बी रो दीटा थे आइदर जू स्टोरी और हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जिनिया वुल्फ समथि यूजिन ओनेल को मोस्टली हैरियट और डिजायर अंडर द एल्म्स आर्थर मिलर का दीटा प्ले प्राय प्रेस्क्राइब हिते ऑल माय सन्स और डेथ ऑफ अ सेल्समैन एंड टेनेसी विलियम्स द ग्लास मेनेजरी और सेटाला कोन ताकरा द स्ट्रीट कार नेम डिजायर एटाला टेनेसी विलियम्स एटा सबु बळे प्रेस्क्राइब हिची सो जो प्रेस्क्राइब टेक्स्ट गुडा का अछि से ड्रामाटिस्ट मान को निहाती पड़ियो ए मान को नॉट अन्य मान को दरकार नहीं पढ़िया ए मान को मिनिमम पढ़िया पड़िबो तांकर स्टोरी जानिया पड़िबो तांकर कैरेक्टर्स के थिले जेंती एडवर्ड माने जू स्टोरी रे एडवर्ड आल्बी का जू स्टोरी दे डील अबाउट व्हाट आल्बी कोंतु को आर्थर मिलर समस्ते they were trying to depict the contemporary American society जो सोसाइटी आरंभ रु स्टार्ट हैला प्रोग्रेस प्रोडक्शन प्रॉफिट आउ प्रॉस्पेरिटी
ସେଇଠୁ ତାପରେ it gave rise to American dream. American dream ହେଲା you have to be successful in life. Life ରେ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ successful ହବାକୁ ତମକୁ ହବ, କାରଣ a failure has no place in the society. ଆଉ ଏଇ American dream କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଛି ତା ଠିକଣା ନାହିଁ. The glitter glamour ତମେ ଦେଖିବ ତମେ ଗଲ, କିନ୍ତୁ you have to be successful. It's a fiercely competitive society. You have to be successful. So ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା, ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ଲାକ୍ସ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ମାର୍ଜିନାଲାଇଜ୍ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ରହିଲାନି, ସେମାନେ କମ୍ପିଟ୍ କରିପାରିଲେନି. ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା, ସେଇ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଏଲିନେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ କଲେ. ଦେ ଫେଲ୍ଟ ଏଲିନେଟେଡ୍, ସବୁଠୁ ସେମାନଠୁ ସେ ଅଲଗା ଭଳି. ଦେ ସଫର୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କ୍ରାଇସିସ୍. ମୁଁ କିଏ, ମୋର ଷ୍ଟେଟସ୍ କ'ଣ, ମୋର ଔକାତ କ'ଣ, ମତେ କିଏ ଚିହ୍ନିଛି, କ'ଣ ଜାଣିଛି, ହୁ am I? ଯେମିତି ଭିକାରୀ ବୋଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଏ ଚିହ୍ନିଛି ଜାଣିଛି, ଡୁ ୟୁ ନୋ ଦ ନେମ୍ସ, ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଦ ନେମ୍ସ. So they don't have an identity. Then ତାଙ୍କର ଗୋଟେ common umbrella term ଭିକାରୀ, beggars. ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, BPL କାର୍ଡ, ଏମାନେ ସବୁ BPL କାର୍ଡ ହୋଲ୍ଡର୍ସ. You don't know their name. So they have an identity crisis. ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମର ଜାଗା କୋଉଠି, where do we belong? सोसाइटी जो हायरार्की जो स्ट्राटा सब है आमे को स्ट्राटा रे फिट करछु. So these people started feeling that kind of an alienation. They wanted recognition in the society. जो माने पढ़ी थिबो हेरिएप रे काहे की he was the yank काहे की jumped that गला काहे की zoo भीतर को गोरिल्ला पाखु गला काहे की, and the gorilla hugged him to death because yank wanted to belong. मोर जागा कोठी, where do I belong, मोर identity कौन, मोर status कौन, where do I stand? That is what so this led, ये जो attitude टा रहिला, this led to total isolation, alienation, rootlessness, identity crisis. और ये सबू dramatist यही गुड़ा ही लिखिले. सबू black Americans, African American novelists, they started writing on these things only. Mostly American literature, it's either about slavery or about the struggle of the black people, or about the American dream, or about the American society, the discrimination in the American society. So एठी कोन एडवर्ड अल्बिरो जू स्टोरी रे कोन हिची दियो तांका सेमानकर स्टोरी रे very few characters are there. जोड़िया लोक पीटर और जेरी. Peter is a big businessman. He has lots of money. So he is in Central Park, New York or Central Park के बस्ती उठे इस जगह रे. Jerry होची कोटे poor man. So he goes there. So Jerry को चाहूँची जे मुँह से जगह रे भी बस्ती. Peter आगुरु बस्ती. And Jerry जितने कोई चलची, Peter is not listening to him. So Jerry wants him मुझे यहाँ उठे कहूँची मो पे at least गोटे श्रोता मिलू. Let me get a listener who will listen to my problem. तेणु जेरी आगु माइंड ठीक कर सारी जे आई विल कमिट सुइसाइड आउ से अठाटा आउ जन को मुंडरे बोली देवी. आई विल से ए लोकटा मते मारी ए भलिया करके जीवी. तो जेरी जाइची पीटर को नाइफ टे धरई शुणी बहुत कहला पीटर शुणलानी. पीटर बाध्य की तार कर देख समस्त सब जिन पाते. दैट इज व्हाट पीटर एवरीबडी डजंट गेट व्हाट ही वांट्स. सो जेरी कौन कर से जो नाइफ रे निजू निज पिटे मरी एंड ही डाइज. जेरी डाइज. से कहूँ पीटर को तू पला पार्क छाड़ी पला कहीं तो पुलिस अरेस्ट कर. एंड जेरी डाइज. माने एटा होची सेमानकर फेट. जेरी भलिया लोकंकर एटा होची फेट. जेमती यांक गोरिल्ला ताको मार देची आंकर फेट हैला एटा. What is better left to fiction? Fact is better left to fiction. Who speaks this line in Zoo story? A. Jerry, B. Peter, C. Martha, D. George. Martha George are the two characters in Who is Afraid of Virginia Woolf of Edward Albee. It is Jerry. Jerry tells to Peter that let us fact is better left to fiction. What is fact? Better left to fiction. That you are Peter, you are a rich man.
पवर्टी प्रॉब्लम ए सब जिनस गुड़ाक तू जानिनु तू केवल जानू केमती ताकू तू स्टोरी भाया करके निजे इमेजिन करिवे सिचुएशन तू जहाँ इमेजिन करियो जेमती माने छोट माने इट सत सत जिनस सत स्टोरीटे माने गोटे राजा को पुओ थिला हम प्री इंडिपेंडेंस टाइम रो से तांको टीचर को पचारा भोक कौन बिकॉज भोक जानिनी because timely he used to have food then all the other students they laughed जे कौन गोटे पिला कहूँ भोक कौन बोली मुझे जाननी तो से टीचर कौन कला राजा को कहले कारण एटा खाया को दियनी एटा सत्य जिनसटे को राजा मु कहबिनी तापर से ताको गोटे दिन फुल खाया को दिया हिनी तापर कला मोर पेट काटुची सो दैट इज भोक he doesn't know what भोक is सो भोक को से गोटे डेफिनेशन करके स्टोरी इमेजिन कर हाँ एमती पेट काटो एमती कर भोक सो यू विल इमेजिन सो जेरी टेल्स टू पीटर तू व्हाट वी आर गोइंग थ्रू इट इज फॉर यू इट्स अ फिक्शन तू इमेजिन कर हाँ पॉवर्टी एटा हाँ लोक एमती खाया को पाती ना खाया को न पाइले एमनकर सो तुम यू विल सिंपली इमेजिन बिकॉज तुम देखी न जीवन कौन बिकॉज यू आर सो रिच यू डू नॉट नो व्हाट पॉवर्टी इज you do not know what struggle is. So Jerry tells this to Peter. People can't have everything they want is spoken by Dash in Zoo story. A Peter B. Jerry C. John D. Marthitis. Peter tells to Jerry, देख Jerry, समस्त सबु जिनस पांतिनी. That means what? Peter also doesn't get any सबु लाइफ रे पाइनी. The place where most of the actions takes place in the streetcar named Desire. A. New York, B. New Orleans, C. New Jersey, D. None of the above. It is streetcar named Desire. That is about Stanley Kowalski and Blanche DuBois. So, our syllabus when I was studying, more American literature special paper and I had Streetcar Named Desire of Tennessee Williams. It's about Blanche DuBois. It is set in southern United States. So southern part रे बहुत जमींदार थिले, landlords थिले, rich people were there. और आमर जो जमींदार जाम माने खानदानी लोग जोटी साउथ रे थिले. And Blanche DuBois loses everything and comes to stay with her sister and brother-in-law Stella and Stanley Kowalski, and they stay in New Orleans. Option B. So Blanche भौणी घरे आसी पहुंची. But so she does not like so खानदानी परिवार लिया. So जेतले देखु 2-room apartment. Her sister is staying in a 2-room apartment. So छी 2-room apartment रे कोन रहिछु. So Stanley doesn't like it. He's a Polish American. She goes, who are you? Mu 2-room apartment रही. Why do you look down upon me? So he from the beginning he simply hates Blanche. तापर से पता लगे ची Blanche आसी ची कहीं की. तापर से पता लगे ची जे ताको बाहर कर दिया जाए ची. Because she used to have lots of affair. Even when she was a school teacher, she had an affair with a young little boy. Then ताको school रू से जगह रू बाहर कर दी ची. She was more or less like a prostitute. So Stanley wants जे ये मो घर को भांगिबो. So this lady should leave my house. And finally Blanche ends up in an asylum. ताको Stanley गोटे as a mental asylum को पठे दीची. Which theatre influenced Badal Sarkar's concept third theatre? A. Indian folk theatre. B. Western experimental theatre. C. Both. A and B. D. None of the above. Who is Badal Sarkar? Badal Sarkar is India a very famous offbeat dramatist, theatre artist, theatre director. So third theatre कहा कौन थी कहलो? जेमती बर्टोल्ट ब्रेट कर एपिक थिएटर, थिएटर ऑफ क्रुएल्टी एंटन कर, सेमती
आंकर हला बादल सरकार हला थर्ड थिएटर माने कौन द ऑप्शन टा मु कहि दोचे आंसर टा कोची इट इज सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न एक्सपेरिमेंटल थिएटर एंड इंडियन फोक थिएटर अच्छा थिएटर हजे कौन सब थिंक ऑफ इट गोटे फिल्म हॉल भाविनियो फिल्म हॉल रे गोटे स्क्रीन थाए किंतु गोटे स्टेज थाए टिके ऊपर को थाए तेणु तुमर कौन हुए ना ऑडियंस माने टिके तल को बसंती आ सेमाने ऊपर था सो ऑडियंस और आंक भीतर गोटे हाइट डिफरेंस थाए अन्य नॉर्मल थिएटर किंतु आंक जो थर्ड थिएटर टा होची कोन ना जेमती गोटे पूरा पूरी गोटे दरी पड़िथो गोटे कार्पेट पड़िथो ऑडियंस एटी बसतो एटी कैरेक्टर माने काम करथो माने दे विल बी परफॉर्मिंग सो कैरेक्टर इमिडिएटली दौड़ सांगे सांगे ऑडियंस पाखु जाई परिबो स्टेप्स चढ़ी तौक आसवा दरकार नहीं दैट इज कॉल्ड सो द कैरेक्टर्स ऑन द स्टेज ऑन द ऑफ द थिएटर ऑफ द प्ले कैन इंटरैक्ट विथ द ऑडियंस डायरेक्टली ताकू ही कहते थर्ड थिएटर जोटा कि हमर इंडियन फोक थिएटर सेटा थिला सो बादल सरकार वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ वेस्टर्न एक्सपेरिमेंटल थिएटर कौन ना जेते बेले ड्रामाटा पॉपुलर हे गला लोकंकर एक्सपर्टीज आसीगला आ बर्तन तो नेट इन विथ गूगल यूनिवर्सिटी एंड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तुम पाखे तो सब प्रकार थिएटर जहाँ चाहिए ता तुम सामने अच्छे सो यू कैन एक्सपेरिमेंट तुम कल्चर तुम सोसाइटी तुम लोक को कोटा फिट करिवो तुम से गुडा कानिक निज कंट्री निजर कल्चर को अडॉप्ट कला भलिया यू कैन क्रिएट यू कैन राइट plays so now you have the you can experiment तमर जेतल गोटे जिंस पे अथॉरिटी जेंति तमे भल यू आर ए वेरी गुड कुक रोसई रे तमे एकदम मास्टरी आसी गला मास्टरी आसला पर कोन करबो तापर तमे एक्सपेरिमेंट करबो देखा एथर मु एई मसला न कि सही मसला देबी देखा मु पियाजटा को न कसिकरी भजा पियाजटा लास्ट रे पकेइबी सो यू टेंड टू यू गो ऑन एक्सपेरिमेंटिंग तमे एक्सपेरिमेंट करी चल काहे कि ना तुम यू आर ए गुड कुक तमे जानचो मु एक्सपेरिमेंट कले जिनसटा केबे खराब लागिबनी टिके अलगा लागिबो केते बेले तुम एक्सपेरिमेंट करने को साहस करिवो जेते बेले गोटे जिंस प्रति तुम जिंस ऊपर तमरो दक्षता आसीची तमरो एक्सपर्टीज आसी जाईची सो यू गो ऑन एक्सपेरिमेंटिंग सो वेस्ट रे थिएटर गुडा बहुत प्रकार एक्सपेरिमेंटेशन चलला सो बादल सरकार वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय both Western experimental theatre and the Indian folk theatre. Which play of Bertolt Brecht has a young prostitute as the protagonist? Bertolt Brecht, जो लोगों की नाजीज्म अगेंस्ट थे, he was against the Nazis, he was against the fascist Brecht. So he had to face a lot of fury. Three Penny Opera, Life of Galileo, और सब ब्रेट लेक्चर थी. C. Mother Courage and Her Children. D. The Good Women of Szechuan. So it was option D, The Good Women of Szechuan. It was in this play. There's a young prostitute. The protagonist is a young prostitute.